Burns percentage, you must have heard. Burns percentage. 50% burn, 60% burn, 70% burn. How is it calculated? 18%, 18%, 18%, 18%, 18%, 18%. Lower limbs. फेस 18 कितना हो गया टोटल? फेस 9, 18 फाइजा 90, and the face 9 becomes 99, and what is 100? That 1% area is the perineal area between the two legs, okay, from below. So that perineum, I am just talking about the deeper boundaries of perineum. The deeper boundaries of, so this area is perineal area. 1% of the surface area of the body, but many important organs, they lie in this area. The organs of defecation, organs of micturition, organs of reproduction, they open from this area. Okay, so this area is very, very, very important as regards surgery, surgical things are concerned. Boundaries of perineum: pubic symphysis, conjoint ischiopubic rami, sacrotuberous ligaments, and lower part of sacrum and coccyx. So what is anteriorly? Pubic symphysis. What is posteriorly? Is coccyx. What is anterolaterally? Conjoint ischiopubic rami. What is posterolaterally? So I am not going to draw a diagram of this. Sacrotuberous ligament. But what is the shape of this perineum? The shape of the perineum is like this. Shape of the perineum is like this. मेरा ज्योमेट्री वीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? हाँ, कोई rhombus, diamond shaped, yes, diamond shaped area, which by a horizontal line is divided into two triangles: urogenital triangle and anal triangle. Urogenital triangle and anal triangle. Okay. In the anal triangle opens the anus, anal opening. In the urogenital triangle, in males opens the urethra. In females, along with that, opens the vagina also. There is opening. Okay. Now what is there in between? Here, in between, is a body called as perineal body. Perineal body, to which 10 muscles are attached. 10 muscles are attached. This perineal body is an important support for all these organs. See, इतने बड़े बड़े organs है, bladder है, uterus है, anal canal है, और इधर एक फ्लोर है. ये फ्लोर के सारे मसल्स को एक जगह पे ये पेरिनियल बॉडी अटैच करके रखती है. सो देयर इज लिवेटर एनाई मसल. विल डिस्कस ऑल दिस मसल्स. All these muscles are attached to perineal body, which is surgically very important. So sometimes during childbirth एपिजियोटॉमी देते हैं. हेड बड़ा है, तो जिसने एनाटॉमी का क्लास अटेंड नहीं किया, कि जैसे कि शुक्ला,
नहीं है ना आज, तो वो लोग डायरेक्टली बेबी यहाँ से बाहर आ रहा है तो ऐसे कट देते, दे कट द पेरिनियल बॉडी, एंड दैट फीमेल सफर्स from prolapse of uterus because this perineal body is the main support for all the pelvic organs, because 10 muscles are attached here. Now what are those 10 muscles? We'll study. Before that, because I'll just tell you the names of those 10 muscles: superficial transverse perineum, deep transverse perineum, bulbospongius. तो उसमें से थोड़े आपने सुने रहेंगे, थोड़े नहीं. तो you need to understand one thing, that here, like this, the way my fingers are, running from one conjoint ischiopubic ramus to the other is the perineal membrane. क्या है ये? Perineal. And here are two pouches. Anterior to the perineal membrane is called a superficial perineal pouch, and deep to the perineal membrane is deep perineal pouch. And I am going to draw diagrams for this. So what I told you is this, कि ऐसे दो conjoint ischiopubic rama है और एक मेम्ब्रेन ऐसा रन हो रहा है, करेक्ट? वो मेम्ब्रेन का नाम क्या है? उसके आगे जो पाउच है उसका नाम क्या है? सुपरफिशियल. नाउ इफ आई टेक अ कट्स, यहाँ पे एक ऊपर एक छोटा सा गैप रहता है, एक गैप में से डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस और क्लाइटोरिस और डॉर्सल नर्व ऑफ वेन पेनिस एंड और क्लाइटोरिस, इट passes. Dorsal nerve and dorsal vein. So they are the structures which don't pierce the perineal membrane. तो ऐसा कुछ हो जाता है ना, something which pierces, something which does not pierce becomes a MCQ. Now if I take a section like this, ये लेवल पे मैंने सेक्शन लिया, तो वो सेक्शन कैसे दिखेगा? देखो, एक साइड पे conjoint ischiopubic ramus, दूसरे साइड पे conjoint ischiopubic ramus, करेक्ट? दोनों को कनेक्ट कर रही है, ये क्या है? पेरिनियल मेम्ब्रेन. दोनों को कनेक्ट कर रही है पेरिनियल मेम्ब्रेन. स्नेहा, और दरवाजा उघड, गरम होतं आणि त्याला तो खुर्ची लावते. थँक्यू. सो when we studied the superficial fascia of the anterior abdominal wall, we said it has two layers. Camphor and so that superficial layer is continuous with the superficial fascia of the perineum, which is called as Colles fascia. So this is Colles fascia. This is perineal membrane. These are conjoint ischiopubic rami. So this is superficial perineal pouch. What is its superficial boundary? Colles fascia. What is its deep boundary? Yeah. Now I'll concentrate firstly on the superficial pouch. So urethra pierces. Urethra pierces the perineal membrane. बराबर है ना? यहाँ पे वो पियर्स करके बाहर आ रहा है पेरिनियल मेम्ब्रेन को. It pierces the perineal membrane, comes here, forms the bulb of urethra. Bulb of urethra. This bulb of urethra is surrounded by a muscle called as
bulbospongiosus. Bulbospongiosus. Here male external genitalia, I will send you the link also, because this year I have not taken this lecture for you. So the crus of the penis is attached to the conjoint ischiopubic ramus. Okay, the penis has a attached part, and that is formed by the crus of the penis. So the crus of the penis will be attached here. Crus. And attached to the crus is another muscle. What is that? Ischiocavernosus. Ischiocavernosus. Okay. This crus is continuous with corpus cavernosum, and bulb is continuous with corpus spongiosum. Okay, so this bulb will be below, the crus will come like this and form corpus spongiosum. So corpus spongiosum is like this. So these two will come together. The bulb will continue as, this will continue as corpus cavernosum. The crus will continue as corpus cavernosus. This bulb will pass in corpus spongiosum, which will contain urethra. Bulbospongiosus muscle is for ejecting the last drops of urine or even the semen, the last drops, because it will contract and whatever is there in the bulb will come out. Bulbospongiosus. Ischiocavernosus doesn't have a role in urination, it has a role in erection. It is attached to the crus. The crus continues as corpus cavernosum, which does not have urethra. So what happens is, corpus cavernosum, it has this venous plexus. When the veins there get engorged, erection happens. Muscle that helps in erection is ischiocavernosus. Now see the arrangement, that in case of erection happening, the urethra, if it get collapsed because of the erection, the purpose of the ejaculation is the method for childbirth in humans. So the ejaculation will not happen. So therefore this has been kept separate. The urethra has been kept separate lower. Okay. This corpus spongiosum comes ahead and forms the glans penis. It forms the glans penis on which the urethra is there. Okay. And that's how ejaculation happens, because this urethra doesn't get compressed. It is kept below separately, and erection, some engorgement happens here also, venous, but main happens here. Okay. So you got, so कोई आपको पूछता है, what are the contents of the superficial perineal pouch? So urethra, bulb, bulbospongiosus, crus of the penis, ischiocavernosus muscle. Now here are muscles, here are two glands called as bulbourethral glands. Bulbourethral glands. So these bulbourethral glands will lie in the which pouch? Deep pouch. And their ducts, they open into the urethra. So ducts of the bulbourethral gland, they lie in which pouch? And bulbourethral glands which lie in which pouch? Yeah. Now previous textbooks,
if you come across the previous textbooks. Previous textbooks used to draw a muscle like this from here to here, and the name of that muscle was sphincter urethrae. Sphincter urethrae. Nowadays they draw the sphincter urethrae here only, इतना सा बस. And ये जो मैंने dotted line निकाला है ना, so we used to call it, this sphincter urethrae muscle was previously called, sorry हाँ, वो क्या हो रहा है ना, ये आईने में मैं खुद को देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से कोई आ रहा है स्टूडेंट. त्याला काय करता येईल? लागतं का ते? असं राहू दे सोड. नाही मी बघ त्याला 2-3. So now the current textbooks वो sphincter urethrae दिखाते ही नहीं, बोलते कि it is there in the wall of the urethra only. ये sphincter urethrae क्या है? What is the sphincter urethrae muscle? It is the voluntary sphincter for micturition, for the bladder, voluntary sphincter. तो इसके ऊपर prostate है यहाँ पे. उसमें से यूरेथ्रा आ रहा है, उसका नाम है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. प्रोस्टेट के ऊपर ब्लैडर है. सो ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर. ये क्या है? प्रोस्टेट. तो दिस इज व्हाट यूरेथ्रा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. दिस यूरेथ्रा इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. Okay, and then the spongy and phallic urethra which lies inside the penis. Okay, so right now I am not drawing that. When we study the urinary bladder and all, that time I will draw that. ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन हो जाएंगे ductus deferens, not the ductus deferens, which unites with the seminal vesicles and now called as ejaculatory duct. So वो ejaculatory duct यहाँ पे open होते हैं prostate, and that's how semen flows like this. So semen doesn't enter the urinary bladder. So urine flows like this. Semen is directly coming from here. Here in the urinary bladder, there is a sphincter called as sphincter vesicae. Sphincter vesicae, which is involuntary sphincter. So sphincter vesicae involuntary है, वो ब्लैडर भर गए ओपन हो जाते हैं. वो देखता नहीं कि अपन क्लासरूम में बैठे हैं, किधर बैठे हैं, क्या बैठे हैं. तो हमारा फ्रेंड कौन है? स्फिंक्टर यूरेथ्री. उसको समझते हैं बाबा है किधर इधर इधर किधर क्लास चालू है. तो स्फिंक्टर यूरेथ्री वॉलेंटरी, इट होल्ड्स. फिर वो उसका भी एक लिमिट है. फिर वो लोग ऐसे ऐसे खड़े होने लगते, फिर ऐसे ऐसे बाबा आ जाओ जल्दी. वो हेरा फेरी वगैरह देखा है कि नहीं आपने? उसमें अंदर बैठो गाना गाने का होगा. तो स्फिंक्टर यूरेथ्री वॉलेंटरी. So what is content of the deep pouch? Sphincter urethrae, correct? What is the another content? Bulbourethral glands. यहाँ पे ही दो मसल होते हैं, उनका नाम है deep transverse perineal muscle, which also runs like this: deep transverse perineal and superficial transverse perineal. Deep transverse perineal muscles. So this deep transverse perineal is again a part of the deep pouch. Superficial pouch के हमने boundaries बोले कि deeper boundaries perineal membrane, superficial boundaries which fascia? Colis.
सो एंटीरियरली वो एक दूसरे से मिलते नहीं, वो ऐसे ही ऊपर चले जाते हैं। इसके लिए whenever urethra ruptures in this area, the urine extravasates upwards like this. It extravasates upwards. अगर ये एरिया में यूरेथ्रा बर्स्ट हो गया तो यूरिन एक्यूमुलेट्स अराउंड द ब्लैडर। पेरिनियल मेम्ब्रेन के बाद बर्स्ट हो गया तो यूरिन एक्स्ट्रावजेट्स अप टू द नेक ऑल्सो, बिकॉज दिस टू दे डोंट यूनाइट विथ ईच अदर, दे गो अपवर्ड्स लाइक दिस, कंटिन्यूसली अपवर्ड्स। सो थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया। तो इसके बाउंड्रीज हम लोग पहले क्या लिखते थे मालूम है क्या? When we were students, we used to write deep pouch, the superficial boundary is perineal membrane, and deep boundary is superior layer of urogenital diaphragm. हम स्फिंक्टर यूरेथ्री का दूसरा नाम एक ज़माने में यूरोजेनाइटल डायफ्राम था, जो आज के ज़माने में स्फिंक्टर यूरेथ्री का एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते लोग। ओके, सो दिस is urogenital. So now current textbook says the deep pouch superiorly or deep is open. बट आप एक दो एडिशन पीछे जाओगे तो उसमें लिखा रहेगा सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। सो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया कंटेंट्स के बारे में। ओके, नाउ अभी पेरिनियल मेम्ब्रेन को हम साइड से देख रहे हैं, पेरिनियल मेम्ब्रेन को साइड से देख रहे हैं। You remember when we studied the lower limb, that time we discussed structures passing from greater sciatic notch and entering again into pelvis by passing through lesser sciatic notch. What were those structures? Pudendal nerve, then internal pudendal artery and internal pudendal vessels. याद है क्या? याद है? कुछ भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा सुना था करके? ग्रेटर साइटिक नॉच में से बाहर जाते हैं, लेसर साइट इस्चियल स्पाइन को क्रॉस करके लेसर साइटिक नॉच से अंदर आते। तभी मैंने आपको बोला था कि आपको भगवान मिलेंगे तो आपको उनको ये क्वेश्चन पूछना है कि इनको पेल्विस में ही वापस आना था तो बाहर क्यों गए और वापस अंदर क्यों आए। उसका रीज़न ये है कि दिस फ्यूडेंडल नर्व इज यूज्ड फॉर फ्यूडेंडल ब्लॉक्स बाय गायनेकोलॉजिस्ट। सो इस्चियल स्पाइन को बराबर से वो क्रॉस करते हैं। सपोज दिस इज ग्रेटर साइटिक नॉच, तो उसमें से बाहर जाके तो इस्चियल स्पाइन को वो क्रॉस करता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, खाली पर वजाइनल एग्जामिनेशन करके इस्चियल स्पाइन को फील करता है, वहाँ पे एनेस्थेटिक इंजेक्ट करता है, फ्यूडेंडल नर्व गेट्स पैरालाइज्ड एंड देन ही कैन डू पेरिनियल procedures on the perineum. So this pudendal nerve block. So this common internal pudendal artery, it gives branch called as inferior rectal artery for the rectum. उसी के साथ there is the nerve. अभी मेरे पास nerve के लिए येलो चौक नहीं है. It will give inferior rectal nerve. And then it comes here, gives posterior scrotal. So जो posterior scrotal जो है nerve branch of the pudendal nerve artery is a branch of internal pudendal artery. And then this continues ahead as artery of penis. Artery of penis. उसको कभी कभी पेरिनियल आर्टरी बोलते हैं, विच कंटिन्यूज एज आर्टरी ऑफ पेनिस. दिस आर्टरी ऑफ पेनिस कम्स नियर द पेरिनियल मेम्ब्रेन, एंड डिवाइड्स इनटू 4 branches. Artery of penis comes near the perineal membrane and divides into 4 branches. Dorsal artery of penis
deep artery, artery, urethral artery, and artery to the bulb of penis. Dorsal artery of penis, deep artery of penis, urethral artery, and artery to the bulb of penis. That means these arteries, they lie in the superficial pouch. Their stems, they lie in the deep pouch. These four arteries will lie in the superficial pouch. Their stems will lie in the deep pouch. वहाँ से दिख रहा है आपको या वहाँ का रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट? नहीं दिख रहा है? दिख आई नो थोड़ा सा क्लिष्ट कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये ऐसा है. In case of females, these arteries will be named as dorsal artery of clitoris, deep artery of clitoris, these four arteries. Then there will be urethral artery and artery to the vestibule. Okay. So now when I draw the perineal membranes in males and females, so this here is pubic symphysis and this is the perineal membrane in case of male, in case of female. So pubic symphysis is here, there is a small gap. These are the conjoined ischiopubic rami. Structures piercing the perineal membrane. In case of males, 1 urethra, 2 bulbourethral glands, ducts of the bulbourethral glands, उसके बाजू में. In case of females, urethra and vaginal opening. Okay, structures piercing the perineal membrane. Structures not piercing the perineal membrane: dorsal vein of penis, dorsal vein of clitoris, dorsal nerve of penis, dorsal nerve of clitoris. ओके फिर ये जो 4 आर्टरीज है, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, यूरेथ्रल आर्टरी, it will be closer to the urethra, an artery to the bulb. वो 4 आर्टरीज. सो यूरेथ्रा, डक्ट्स ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, 4 आर्टरीज. और जो पोस्टीरियर स्क्रोटल वेसल्स है ना, वो भी यहाँ पे रहेंगे, पोस्टीरियर स्क्रोटल वेसल्स. क्लियर? सो स्ट्रक्चर्स piercing the perineal membrane in case of males is urethra, ducts of bulbourethral glands, ये 4 arteries, dorsal artery, deep artery, artery to the bulb and urethral artery. In case of females, dorsal artery of clitoris, deep artery of clitoris, urethral artery and vestibular artery to the vestibule. Posterior labial arteries instead of posterior scrotal vessels, posterior labial vessels. So urethra and one structure, ऐसे मैं याद रखता था, urethra and ducts of bulbourethral glands, urethra and vagina.
सो अभी आपको एक पिक्चर थोड़ा सा तो क्लियर हो गया कि पेरिनियल मेम्ब्रेन को क्या पियर्स करता है, पेरिनियल मेम्ब्रेन के आगे क्या है, पेरिनियल मेम्ब्रेन के पीछे क्या है. So till now we were only discussing the urogenital triangle. In last 10 minutes now we will discuss the anal triangle, only the perineal region. We started our lecture like this, right? We said this triangle is called, and then there is perineal membrane. We saw what structures pierce it. This is anal triangle. This is the anal opening. What is this? So now you know there is deep transverse perineus, superficial transverse perineus muscle, bulbospongiosus muscle, the anal sphincter, the levator ani muscles on both the sides. These many muscles are attached to the perineal body. 2 bulbospongiosus, 2 levator ani, 2 deep transverse perineus, 2 superficial transverse perineus. ऐसे ही 8 हो जाते. The external anal sphincter and the longitudinal coat of the anal canal, ऐसे करके 10 muscles हो जाते. 2 levator ani which forms the pelvic diaphragm, levator ani. 2 deep transverse perineus, 2 superficial transverse perineus, 2 bulbospongiosus, 8 हो गए. External anal sphincter and longitudinal coat of the GI tract, ऐसे करके 10 muscles are attached to the perineal body. इतना मैं मर के सिखाता हूँ हर साल, और वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच आ जाता है क्वेश्चन, सी ऑप्शन करके आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में. और आज तक 25 साल हो गए मैं एनाटॉमी सिखा रहा हूँ, किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है, बच्चे नहीं करते वो. बाकी स्टमक रहेगा, लीवर रहेगा, पैनक्रियास छोड़ के इधर कौन आएगा. बट एनीवेज दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस पे एमसीक्यूज आते हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस के लेवल पे. सो दिस इज द फेवरेट एग्जामिनर्स का क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पूछने का ये फेवरेट एरिया है इन थियोरी, स्पेशली एमसीक्यूज, स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, नाउ ये एनल कनाल के बाजू में एक स्पेस होता है and that is called as ischioanal space. Ischioanal space, previously this space was called as ischiorectal fossa. This fossa is full of fat. This is full of fat, and that's what keeps the anal canal collapsed. That what keeps the anal canal collapsed. So when the stool passes, this fat goes aside. That's what causes the smooth passage of stool. So fat जरूरी है. Severe malnutrition होता है तो यहाँ का ischioanal fossa का fat भी dissolve हो जाता है, and the rectum and anal canal prolapse out from this opening. So this is a very important fat. But because there is fat here, less blood vessels. Fat means less blood vessels. Less blood vessels means less resistance. मारेगा कौन? Infectious. And यहाँ पे hair follicles होते हैं. So hair follicle gets infected. This leads to abscess, very common in this area. Abscess spreads like anything. because खाली fat है. ओके, इट्स अ फीस्ट फॉर द बैक्टीरिया. अरे फैट है, इधर कोई अपना अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, नो ब्लड वेसल्स. व्हेन आई टेक अ कोरोनल सेक्शन, दिस इज द एनल canal. Lower part is like this. Okay, now before I go ahead, these two fossae are united behind the anal canal by a horseshoe recess. So that's how this entire thing looks like a horseshoe.
horseshoe. Two ischioanal foci united by a horseshoe recess behind the anal canal. उसका डेंजर क्या है कि फिर एक इश्योएनल का इन्फेक्शन दूसरे इश्योएनल में जा सकता. ओके, नाउ आई एम ड्रॉइंग फॉर यू a coronal view. If a cut section is taken in the pelvic region, posteriorly, how it looks like. So this is the anal canal. This space, this is the buttock. This space here is called as the perianal space. Okay, perianal space. Now this side is ischial tuberosity. This side is ischial tuberosity. I am not drawing again for that side. This is ischium. Which muscle is there on the inner side of the ischium? Which muscle is there on the inner side of the ischium? कौन सा मसल है? लाइनिंग द इनर साइड हियर. चलो आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे obturator internus, where my fingers are. So the obturator internus is here. So जब मैं कट सेक्शन ले रहा हूँ तो जो पेल्विस के जो दोनों साइड पे जो बोन्स है, दे आर लाइंड बाय विच मसल? obturator internus. This obturator internus is covered by a obturator fascia. They are covered by obturator fascia. Okay. Attached to the obturator internus. Attached to the obturator internus is this muscle. इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं. सो ऑब्चुरेटर इंटरनस दोनों साइड पे ऐसे है और उसको अटैच्ड वहाँ से ओरिजिन लेके दोनों साइड से ऐसा जो मसल आ रहा है, दैट मसल इज लिवेटर एनाई मसल. लिवेटर एनाई मसल. दिस इज द मसल विच फॉर्म्स द पेल्विक डायफ्रैम. बराबर है ना? Obturator internus lies in the walls of the pelvis. समझ रहा है आपको? ये मेरे हाथ क्या है? Obturator internus. So pelvis को अंदर से वो कवर करेगा, बट नीचे सपोर्ट कौन देगा? तो इसके लिए उसके ऊपर से एक मसल ऐसा जाता है, दोनों साइड से ऐसे आता है. मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ही दिखा रहा हूँ. दिस मसल इज कॉल्ड एज लिवेटर एनाई. ये दो लोग ने तो गिव अप ही कर दिया. आरती ने. आरती उठ बाड़ा, उठ. गीतांजलि उठा. गिव अप नहीं करने का ऐसा इतना जल्दी. सो विच मसल इज दिस? लिवेटर एनाई. सो लिवेटर एनाई फॉर्म्स द व्हाट इट फॉर्म्स? पेल्विक डायफ्रैम. यहाँ पे जो एनल स्फिंक्टर यहाँ पे, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. ओके, इट इज हियर. क्लियर? उसके अंदर इंटरनल रहेगा, बट मैं अभी खाली एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के बारे में बता रहा हूँ.
and here runs a fascia like this called as lunate fascia. A fascia called lunate fascia. Lunate fascia. So this here are the pad of fats. यहाँ पे भी fat है, यहाँ पे भी fat है, but this space is called as which space? Perianal space. These are the two ischioanal fossae. On two sides between the anal canal and the ischium are the two fossae called as ischioanal fossae. Previously they were called ischiorectal fossae. Ischiorectal fossae. ये क्या है यहाँ पे? तो ये एरिया में तीन चीज हमको दिखता है. एक ischioanal fossa, perianal space, ischioanal space, and this is the pudendal canal, जिसके अंदर हमारे जो तीन नर्व्स और ये थे ना, pudendal vessels and nerves. So this is the pudendal canal, number 3. So on both the sides of anal canal are the ischioanal fossae, which have 3 parts. Gitanjali, what are the 3 parts? Ischioanal space, perianal space, and pudendal canal. I know this is difficult to understand. इसके लिए उसके ऊपर बार और एक लेक्चर होगा. This fascia is the lunate fascia. So this is sometimes called as tegmental space, suprategmental space and all. ये तो कोरोनल व्यू में आपको दिख रहा है. उसका एक पैरासजाइटल व्यू भी है. आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दैट फॉर यू. Other day I will draw. When you get some orientation, I will explain it to you. Currently, at least you should know the boundaries. That lateral side is obturator internus. What is there on medial side? External anal sphincter and levator ani bhi hai na, medial side. So what forms the lateral wall of the ischioanal fossa? Ischium and obturator internus and obturator fascia. What forms the medial wall? External anal sphincter and levator ani. 3 spaces are there inside. The posterior scrotal vessels, S4 nerve, S2 nerve, S3 nerve. These are the contents, but the main content is the pad of fat. So when the stool passes, this pad of fat is pushed like this, and when the stool passes off, it collapses the anal canal. अभी इसमें गड़बड़ क्या होता है कि यहाँ पे हेयर फॉलिकल है, यहाँ पे हेयर फॉलिकल है, यहाँ पे ये अंदर जाके इसको अगर इन्फेक्ट किया, यहाँ पे एब्सेस हो गया. सो दिस एब्सेस में ओपन लाइक दिस आउट, इट में ओपन इन and it may open in and out. So when this happens, this is called as fistula. Now the stool has 2 routes of coming out, one and through this canal coming out. So fistula is the worst thing that can happen to somebody. हम लोग सुना रहेगा ना, पाइल्स फिशर फिस्चुला. तो बिकॉज ये ट्रैक हील कैसे होगा, बिकॉज उसमें से कंटिन्यूस स्टूल जा रहा है एंड स्टूल इज वेरी इन्फेक्टिव. सो फिस्चुला ऑपरेशंस, लेजर सर्जरी एंड ऑल आर डन. सो टाइम इज अप. सो थैंक यू सो मच. इसके और 2 रिसेसेस होते हैं एक्चुअली, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. आई विल एक्सप्लेन इट यू लेटर.